नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 13 फरवरी 2023 सोमवार है। हर रोज़ की तरह हम आज भी निफ्टी में कल का क्या रुख बनता है या अगले कुछ दिनों का क्या रुख हो सकता है उसकी बात करेंगे। पिछले वीडियो में आज के लिए जो व्यापार मैं सोच रहा था अपने लिए, मैंने आपको बताया था कि भाई 2 दिन का लो है, यानी शुक्रवार और बृहस्पतिवार। शुक्रवार को नैरो रेंज डे था तो उसको और बृहस्पतिवार दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका लो बनता है 17,780। तो 780 के नीचे बिकवाली बनती है और ऊपर में 17,920 या 900 प्लस के ऊपर ख़रीदारी बनती है। आज बाज़ार खुलते ही नीचे आने लगा और 17,780 का जो स्तर था उसको तोड़कर नीचे गया। वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली मैंने। और सच तो ये है कि शॉर्ट पोजीशंस पहले ही ले ली थी, वो इसलिए क्योंकि जब शुरू के 15 मिनट के कैंडल्स बने, निफ्टी उस 15 मिनट के लो के नीचे टूटने लगा तो पहले एक आभास होने लगा कि शायद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ी पोजीशन उस समय ली, फिर तब ली जब 17,780 टूट के नीचे आने लगा तब ली। कुल मिलाकर अभी मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड में है। वो कम होती है लेकिन इस समय शॉर्ट है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, बात यह है कि 17,780 तोड़ने के बाद बाज़ार ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई, बस वो हल्का सा तोड़ के नीचे 50-60 पॉइंट नीचे गया, फिर ऊपर आया, कोई ख़ास एक्टिविटी हुई नहीं। इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों की जो प्राइस रेंज है, 7 ट्रेडिंग डेज, 7 व्यापार के दिन, अवकाश को, छुट्टियों को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही टाइट एक नैरो रेंज में अभी भी बंधे हुए हैं। 17,700 नीचे की तरफ और 17,900 ऊपर की तरफ। तो ये 200 अंकों में ना ये सारा ड्रामा नाटक हो रहा है। ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कोई नया स्तर बना लेता है, उसके बाद भी 700 के पास आके रुक जाता है। इसलिए अब मेरा फोकस इन 2 स्तरों पर है, 17,700, 17,900। इसके अंदर जो इंट्राडे का ट्रेड बनेगा सो बनेगा, ना बने तो कोई बात नहीं है। ये स्तर टूटेंगे। अब ये नीचे का टूटेगा या ऊपर का ये कहना बहुत मुश्किल है, पर जब भी इन लेवल्स में से, इन स्तरों में से कोई सा लेवल टूटेगा तो वहाँ एक ट्रेड बनेगा। ये बात अलग है कि इंट्राडे में आपको रुख लगने लगे कि ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है 17,900 को तोड़ दे, तो आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन पहले से ले लीजिए। इसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर ऊपर नहीं गया तो आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। यही बात नीचे आने की होती है कि 17,700 के पहले अगर आपको आभास हो कि भाई बाज़ार नीचे आ रहा है तो थोड़ी पोजीशन ले ली और पूरी पोजीशन ली जब 17,700 टूटता है तब। इसके बीच में कुछ भी कर लीजिए, कोई खास विशेष ट्रेड बनेगा नहीं। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मान लीजिए आप ट्रेड कर भी ले, इसका स्टॉप लॉस आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका इंट्राडे ट्रेड है उसका स्टॉप दूसरा है। यदि आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो उसका स्टॉप होगा शुरुआत में, उसका स्टॉप जो ट्रेडिंग रेंज का दूसरा छोर है ना, दूसरा एंड है, वो होता है। यानी अगर बाज़ार नीचे गया, 17,700 को तोड़ता है तो शुरुआती स्टॉप 17,900 का होगा। फिर बाज़ार थोड़ा और नीचे जाएगा तो आप उस स्टॉप को नीचे तुरंत लेते आइएगा। पर इस तरह से स्टॉप का मैनेजमेंट होता है। और प्रॉफिट कैसे लिया जाता है? प्रॉफिट लिया जाएगा, जो ट्रेडिंग रेंज है वो एक प्रकार का टारगेट बनता है। यानी 200 पॉइंट का रेंज है, 17,700, 17,900, तो दोनों तरफ 200 पॉइंट जोड़कर टारगेट बन जाता है। लेकिन उस टारगेट के अलावा आप कोई एक तरीका रखिए अपने चार्ट पर, या तो जैसे मैंने आपको बताया कोई ज़ीरो लैग एवरेज रखिए, वो घूमने लगे तो आप चौंक जाइए कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, टारगेट पहुँचे बिना ही ये वापस घूम रहा है, उल्टा ऊपर दूसरी तरफ जा रहा है। या फिर आप कैंडल्स को देखिए, कोई बहुत लंबा कैंडल बनता है बहुत सारे शेडोज़ के साथ में, तो वो एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। ये सब बातें आपको मैनेज करनी पड़ती है। तभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इंडिकेटर्स, टूल्स अपनी जगह हैं, इसको मैनेज करना, माहौल देखना, कॉन्टेक्स्ट देखना आपका काम है। अभी क्या ट्रेड मैं करने वाला हूँ वो मैंने आपके साथ साझा किया है। आप अपने कमेंट्स देते रहिए। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is 13 February 2023, Monday. As usual, we will talk about the Nifty View for tomorrow and for the next few days. For today, I had explained that the market is in a narrow range, and because Friday was very narrow, we actually create a candle comprising of 2 price bars, Thursday and Friday.
and use that as the narrow range price bar. So the low of that narrow range, that two bars combined was 17,780. If the Nifty starts drifting below 780, then we look to go short, because then that level range is breaking down on the downside. Now today the Nifty opened and then it's moved up and down for the first 15 minutes, and then it started sliding. There was an anticipation that it could break 17,780, and why this anticipation was there? Because the Nifty had already broken the low of the first 15 minutes. So I took some positions when the low was broken, very small, and larger positions when 780 was broken, 17,780 was broken on the downside. But the market didn't do much. It went a little lower, 50 or 60 points. Then it rallied also. So it closed with some very minor losses. What's the view for tomorrow and what is my outlook? See, now we leave aside this 2-day range. If we look at a bigger picture for the last 7 trading days, remember these are trading days, not calendar days, which means actually the days are more, Saturday, Sunday included. For the last 7 trading days, the Nifty has been trading in a very narrow range. So if we take that range, it's 17,700 on the lower side and 900 on the upper side. This range is going to break. I have no idea where it will break, but my sense is that when the breakout comes on the upside or the downside, it will not be a false breakout, because the market has been chopping around for a long time. So whichever direction it takes finally, I am assuming that direction hopefully will be a serious move. So the big trade is to wait patiently for this breakout or breakdown to happen. You can anticipate this breakout or breakdown. Suppose the Nifty starts going up and you sense that the trend is up today and there is a strong chance that it can break 17,900. You can start taking small positions, and of course in anticipation of that breakout, and of course you must be prepared to reverse and close that position if the breakout doesn't happen. And this of course can cause losses also, but it is possible to anticipate, and there are plus points and minus points when you anticipate this kind of breakouts or breakdowns. Traders must understand it. The other point that I wanted to explain was, how do you put a stop loss and where do you put a target? How do you take a profit in this particular trade? See, the trading range is 200 points. Now the stop loss initially has to be the other side of the breakdown or breakout. So if the Nifty goes down 17,700, your initial stop will have to be 17,900. Nothing has to happen. My initial stop will be 17,900, and very quickly I will bring the stop down. Very quickly. If the Nifty goes up, breaks 17,900, my initial stop is 17,700, and very quickly stops will be raised. How do we take a target? See, broadly, the theory is that the target for this trading range is the width of the trading range, so 200 points. So if it falls down, 17,700 minus 200, 17,500 is your target, and add 200 points to 17,900, 18,100 is your target. But there is no guarantee and there is no reason the markets will oblige us by coming and touching the target. So you have to have some other plan B also. One of that is follow a zero lag moving average. If the zero lag moving average starts turning against you, be warned that something is happening. The second option is look at candlestick patterns. If a candle with a long shadow is made, that suggests that a reversal is occurring. I am very fond of long shadows. They almost always tell us something is going to change. May or may not, but that message comes. So these are the ways I start taking profits even if the targets are not met. This is how I put a stop loss. And of course, you also understand that it is for the market to reward. It is not for me to extract something from the market. I hope I never try to do that. I can't do it. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.